Can you see my screen? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. now we will start what is stack, what are the operations that we can perform on stack, and then memory representation. So what is stack? It is a linear data structure of variable size. In array, insertion and deletion can occur at any place. आपको इसमें आता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में array में insert करना है, end में करना है, in between करना है, after last element करना है. But in case of stack, you have to perform operations only from one end. That is called top. So insertion operation is called push and deletion is known as pop, right? So it is last in first out. Last in first out means last item added to the stack will be the first item to be removed from the stack, right? So we can represent stack like this in the form of array. Here we have, this is the name of the array, stack, and these are the four memory location where we have inserted these four items. So first of all, we will insert item 40 and then 30, 20 and 10. If you want to remove, which item will be removed first from this stack? For example, if we want to remove 40, to remove 40, first of all, we will remove 20, 30 and then 40, right? So the element, if we want to add some element into this stack, for example, we want to add 50. So we will check whether there is a space, free space available in this stack, right? If there is no free space, then there will be a condition for overflow, right? Similarly, if you want to delete or pop some element from this tag, we can pop only the topmost element, that is 10, right? And similarly, if we want to delete an element from a stack which is already empty, right? In that case, this is called underflow. Underflow means whenever we want to delete an item from a stack and that stack is already empty, you cannot delete an item, right? So these are two operations, push and pop. So push means insertion of new element into the stack. It will be located at the top of the stack. We can perform push operation only when stack is not full. That that is stack has space for new element. When stack is full, this condition is known as overflow, right? Similarly, uh, in this example, we have shown the push operation. If we have the empty stack, stack is empty, it means top is 0 initially. And if we have inserted this item 2, push 2, in that case, top will be incremented by 1, right? इनिशियली आपका देखो जैसे एरे के केस में है 0 है, जैसे अगर हम एरे को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस केस में हम टॉप को नल ले लेते हैं. नल मीन्स -1, ठीक है. एम्प्टी स्टैक का मतलब है टॉप जब आपका नल है, नल मीन्स -1 मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, राइट? तो जब आप वन आइटम पुश कर दिए, इस केस में टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो टॉप विल बी 0, ठीक है. आइटम इन द एरे, ठीक है. व्हेन यू इंसर्ट द नेक्स्ट आइटम, इन दैट केस टॉप विल बी 1. सिमिलरली हियर टॉप इज 2, टॉप 3 एंड यहाँ पे आपका टॉप 4 हो गया. अब नाउ वी कैन सी the array is already full. If we want to perform addition, this insertion operation, in that case we will check if top is 0, 1, 2, 3, 4. If top is equal to 4, that is the maximum size. It means you cannot insert an item. तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दोगे overflow condition, right? Clear हुआ? Similarly, pop means removing, deleting an item from the top of the stack. We can perform pop operation only when stack is not empty. When it is empty and we are trying to remove an element from the stack, then this is known as underflow, right? If top is equal to -1 or null, it means stack is empty. You cannot remove any item, right? So here we can see the top is equal to मैक्स स्टैक. टॉप आपका फुल है, जैसे हम इस पे पॉप लगाएंगे तो 6 पॉप हो जाएगा एंड देन अगेन 5, 4, 3, 2. अब यहाँ पे जब आप पॉप ऑपरेशन आ रहा है एंड यू विल चेक टॉप, इफ टॉप इज इक्वल टू नल, इट मीन्स -1. हियर यू कैन प्रिंट
that underflow stack is empty, we cannot delete an item from the stack, right? So how we can represent stack in the memory? जस्ट लाइक एरे के केस में हमने किया था, सिमिलरली हम ट्रीज, ग्राफ, क्यूज जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबसे देखो सबके क्वेश्चन सेम रहते हैं इसमें आपके थ्रू आउट योर सिलेबस. यू विल लर्न about the definition, what is this, and then their memory representation, how we can represent all these in memory, and then we have operations, आप उसके ऊपर क्या क्या operations perform कर सकते हो, and last में आप you will study the applications. आपने देखना है थ्रू आउट हम यही आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा. डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एंड देन देयर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशंस, उसमें हम एल्गोरिदम करेंगे, और लास्ट में आपकी आएगी एप्लीकेशंस, उसको रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं. तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को हम अब स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर टू वेज. वन इज विद द हेल्प ऑफ एरेज एंड सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट. अब यहाँ पे देखो एरेज में आपका होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए लेते हैं, एंड लिंक्ड लिस्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर दैट इज हेटेरोजेनियस एलिमेंट. तो स्टैक को हम दोनों वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी एरेज की फॉर्म में भी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट, राइट. सो एरेज की फॉर्म में भी हमने जो प्रीवियस किया रिप्रेजेंटेशन, ये सिंपल फॉर्म है, बट एन एरे पुट्स certain restriction while representing the stack. इसमें क्या होता है, आपको एडवांस में आप मतलब फिक्स करना पड़ता है साइज ऑफ द एरे. स्टैक का साइज फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज एरे में हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है. एक तो स्टैक मस्ट कंटेन होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स. One must specify the upper bound of the array, that is the maximum size of stack must be defined before implementing it. तो जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं हमें इन टू रूल्स को फॉलो करना है. फर्स्ट क्या होगा, द डेटा एलिमेंट शुड बी ऑफ होमोजेनियस टाइप्स. सेकंड, वी शुड नीड टू set the size of the array in advance, right? So while implementing a stack using an array, a variable top is used to hold the index of the stack's topmost element. Initially the stack is empty and top is 0. अब देखो कई बुक में आप देखोगे कि जहां पे हम एरे को 1 से स्टार्ट करते हैं चाहते हो 0 to n-1, उस केस में आप टॉप को -1 भी ले सकते हो, ठीक है. ये नोटेशन अलग अलग बुक में मिलेंगी आपको डिफरेंट, तो इट्स योर चॉइस, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो. तो अगर हम इनिशियली टॉप 0 ले रहे हैं तो एज वी इंसर्ट एन एलिमेंट इट्स वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 1. Similarly, when we delete an element, its value will be decreased by 1. And what is max? Max represent the maximum size of stack. ठीक है, दिस इज योर साइज ऑफ द एरे. क्योंकि एरे के केस में देखो जब हम ले रहे हैं तो वहां पे आपको क्या चाहिए, नेम ऑफ द एरे पता होना चाहिए, ठीक है. देन मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे, एंड दिस इज योर टॉप, कि इनिशियली आपके पास स्टैक पे कितने एलिमेंट स्टोर है, ठीक है. सो दिस इज एरे को हम देखो वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हियर स्टैक इज द नेम ऑफ योर एरे, right? And this we have 4 elements in this stack, ठीक है. अगर हम टॉप की वैल्यू बात करें और अगर हम टॉप को इनिशियली हम -1 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3, इस केस में टॉप इज 3, ठीक है, एंड मैक्स साइज भी आपका 3 है. सिमिलरली इसमें इसको रिप्रेजेंट करने का ये वे, इस अगर हम इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केस में फर्स्ट 14 इंसर्ट होगा, देन 30 20 एंड 10. सिमिलरली जब हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में आपका लेफ्ट टू